of like wx plus b. This is what आपका जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो इस वैल्यू से आएगा ना. आप बेसिकली इनपुट लेते हैं, जितनी भी इनपुट्स हैं उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें बायस को ऐड करते हैं या इंटरसेप्ट को ऐड करते हैं, और जो नतीजा आता है ये आपका रिग्रेशन का नतीजा होता है. ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ आई है इस वैल्यू को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से गुजार देते हैं. यानी इट्स सिंपल रिग्रेशन, ये सिंपल रिग्रेशन है. आप इस रिग्रेशन के साथ क्या करते हैं, आप इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से गुजार देते हैं. यानी वो क्या बनेगा, दैट विल बी 1 over 1 plus z raised to power e raised to power minus wx plus b. राइट, यानी जो लीनियर रिग्रेशन का नतीजा आपके पास आया था आपने उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से गुजार के एक कर्वी बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट? कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लीजिए. We will have to devise better functions then. Like we have, we will be talking about, I hope we will be talking about that. For example, we have cross entropy then, right? So obviously it will build on this. हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को डिफाइन करेंगे, लॉस फंक्शन को डिफाइन करेंगे. अभी हम प्रॉपर लॉस फंक्शन को, अभी हम सिर्फ प्रेडिक्शन डिफाइन कर रहे हैं. तो प्रेडिक्शन के बाद हमें लॉस फंक्शन डिफाइन करना है. लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे जो लाइक 2 क्लासेस के लिए, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स एज वेल. जी ओके. अब ये बात हमें मालूम है कि जो फंक्शन हमें रिजल्ट देगा वो रिजल्ट 0 और 1 के दरमियान होगा. यानी बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि वो जो रिजल्ट हमें देगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. राइट, वी कैन फॉर एग्जांपल कॉल इट लाइक समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट f of w and b is going to be, which is basically instead we say like f of w plus b. It's difficult to like remember all these notations. Which is done on x will be basically like equal to probability that y is 1 given that you are using x as input and w and b as parameters. Look at this expression. What we are saying here is that what we are predicting is based on input x using parameters w and b, what we are predicting is the probability of the prediction being 1. The probability of the prediction, why is your prediction, right? Outcome. The probability of prediction being 1 given that you are using x as input and w and b as set of parameters, right? And like as she just asked at the beginning, what is the difference between input and parameters? I hope you know that. We also call this features. हम इनपुट को फीचर्स भी कह देते हैं, राइट? सो दैट्स लाइक ऑल राइट. नाउ इफ वी से दैट अगर आपको किसी स्टेज पे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वैल्यू 0.7 मिल रही है, ठीक है, दैट मींस इट इज सेइंग दैट ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल द ट्यूमर बीइंग मैलिग्नेंट इज 0.7. the probability we are saying that okay the probability of the tumor being malignant is 0.7. Then what is the probability of the tumor being benign? That will be 0.3 because the probabilities always add up to 1. क्योंकि हमारे पास 2 ही possible event हैं तो दोनों का sum 1 होगा. अगर ट्यूमर के malignant होने के इम्कान 70%, 0.7 का मतलब क्या है? There is 70% chance that the tumor is malignant. So that automatically means that there is 30% chance that the tumor is benign, right? So computing one probability automatically gives you the other probability. That is simply the complement of that. So if like one probability is like this, the other will be 1 minus b, right? And they both will add up to 1.
Okay, the next thing is like drawing a decision boundary. अब डिसीजन बाउंड्री हम इस बात पे तय कर लिया हमने कि हम डिसीजन बाउंड्री बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं इसकी बेसिस के ऊपर। अभी तो हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि ओके लाइक फॉर एग्जांपल हम एक थ्रेशोल्ड तय करते हैं 0.5 और 0.5 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट। नाउ द थिंग इज that we have to have like multiple training examples, हमारे पास multiple training examples होंगी और हमें उन multiple training examples के अंदर ये line draw करनी है किसी जगह पे, ठीक है। For example जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि okay let's draw this line for example here at 0.5, so that's your decision boundary और ultimately हमें find क्या करना है, ऐसी ही एक decision boundary जो हमारे cases को justify कर देगी। अब अगर हम threshold अब जो थ्रेशोल्ड हमने अगेन वही कि जो हमने थ्रेशोल्ड रखी है 0.5, तो ये क्या सोच कर रखी है that okay this is the middle value, let's classify it or let's bisect it on the middle value because दो ही क्लासेस है तो हम इसको bisect कर देते हैं मिडिल वैल्यू के ऊपर। so 0.5 के लेफ्ट पे एक क्लास हो जाएगी और 0.5 के राइट पे एक क्लास हो जाएगी। so this is how we can draw, how do we get these values। मिसाल के तौर पे 0.5 कब वैल्यू आती है, जब हमारे पास z की वैल्यू 0 होती है, राइट। जब हमारे पास z की वैल्यू 0 होती है तो हमारी आउटकम प्रेडिक्शन आउटकम 0.5 आती है उस केस में, ठीक है। और हमारे पास और मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम कहते हैं दैट इट इज पॉजिटिव और अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम कहते हैं दिस इज negative, like this is one class, this is the other class, right। तो z की वैल्यू 0 या उससे बड़ी कब होती है, जब अब z कहां से आ रहा है, z बेसिकली आ रहा है इस फंक्शन से। ये फंक्शन बेसिकली किस चीज पर डिफाइंड है, w और b पे, राइट। ये इनपुट के तौर पे x इस्तेमाल करता है और w और b को बतौर पैरामीटर्स इस्तेमाल करता है। इस फंक्शन से हमें मिलती है z की वैल्यू। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि z की वैल्यू जब 0 या उससे बड़ी होगी तो हम उसको पॉजिटिव क्लास कहेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि जब इस फंक्शन का नतीजा 0 या उससे बड़ा होगा तो दैट विल बी योर पॉजिटिव और द राइट क्लास, एंड व्हेन इट विल बी लेस देन 0 इट विल बी योर नेगेटिव क्लास और द अदर क्लास। पॉजिटिव क्लास आप किसको कहते हैं और नेगेटिव क्लास आप किसको कहते हैं, इट डिपेंड्स, राइट। बट लाइक यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द क्लासेस इन दिस वे, राइट। Okay, so for example let's take this simple example that so we have like f on w and b defined on x vector and that is equal to like g of z and that is equal to like on defined on two variables, g of w1 x1 plus w2 x2 plus d. Why is there noise? Okay. Why is there noise? Can you please be silent? If you're troubled, like you can go out and take some care. This is what we are deciding, right? If for example like you are sitting as a programmer and you are getting an opinion from an expert and you have to crunch these numbers, that what is the point where you are going to draw this boundary, right? Nobody else is going to come and draw this boundary for you, you are going to decide। अब यहाँ हम 0.5 पे क्यों कह रहे हैं, फिलहाल हमें लगता है कि अगर दो क्लासें हैं और नंबर 0 से 1 में रेंज कर रहे हैं तो दरमियान में डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं इक्वली, राइट। देयर इज नो पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग एट द बैक एंड, जिसे हम छुपा रहे हैं कि नहीं ये बताएंगे नहीं, इट्स लाइक ओपन, राइट। ओके, so for example you have like this equation now based on which you are going to like decide something। अब हमें जाहिर है x1 x2 ये तो तय है पहले से, ये तो इनपुट फीचर्स हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। w1 w2 और b की वैल्यूज आप डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम w1 1 लेते हैं, w2 1 लेते हैं और b
-3 लेते हैं, राइट? अगेन सवाल ये है कि W1 1 क्यों लिया, W2 1 क्यों लिया और B -3 क्यों लिया? क्या ख्याल है? Do you think it is really a genuine question? It's not a genuine question because who is going to basically deal with these things? W1, W2 और B की values के साथ play किसने करना है? Is it going to like directly be done by like a machine learning program? Obviously somebody has programmed it at the back end, but basically you will be using gradient descent for this purpose. Weights की यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करना किसका काम है? हमने बहुत शुरू में कहा था कि ये वैल्यूज हम मालूम कैसे करेंगे, तो हमने कहा था कि हम ये मैनुअली नहीं कर सकते, हमें कोई तरीका चाहिए जो ये काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर दे। तो हमने शुरू में ये बात की थी कि ग्रेडियंट डिसेंट वो एल्गोरिथम है जो हमारे लिए ये काम करता है। इट स्टार्ट्स विद द रैंडम वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स and it just keeps on adjusting them slowly to make sure that it has converged to a point where it has minimized the loss, right? So this question is not really a legitimate question that why have we taken this to be 1 1 and -3. It's just that it suits us for our calculation in this case. Okay, so for example, let's say that we have some data here, so like it's 0 here, it's 3 here and it's 3 here, it's like 2 here and it's 1 here, so 1 here and 2 here, right? And like we have points something like I'm just drawing the boundary first for the sake of safety ताकि मैं कोई point color draw ना कर दूं। Like these are the points which are like on one side of the boundary and these are the points which are on other side of the boundary, right? Okay, let's say कि हमने ये जो पैरामीटर्स लिए हैं हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? We know that the z is coming from w x plus t, right? We are calculating this on the basis of that, right? And we say that okay, we want to draw our boundary when the z is 0. हम अपनी बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं? उस पॉइंट पे जहां पे z 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब z 0 होता है तो हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की आउटकम 0.5 आती है, और अभी तक की इंट्यूएशन में हमने ये तय किया है कि 0.5 के एक तरफ एक क्लास और दूसरी तरफ दूसरी क्लास होगी। तो हम कहां अपनी डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करना चाहेंगे? जहां z 0 है या जहां लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जवाब 0.5 है। और वो कब होता है? जब z की वैल्यू 0 होती है। और z की वैल्यू किससे आती है? wx plus b से आती है, right? Okay, now what is wx plus b? It is like w1 x1 plus w2 x2 plus b, and that is equal to 0. Now we know the values of w1, w2 and b that we have just randomly chosen to be 1 1 and -3. Let's see if they suit us or not, right? Now this is 1, this will be x1 plus x2 because they both are 1, right? Minus 3 equal 0. That means x1 plus x2 will be 3, right? And this is what we have done here. The decision boundary is drawn here, and it just happens so that in this case जैसे हमने ये वैल्यू 1 1 और -3 रखी और हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अगर हमें एक रैंडम डोमेन के अंदर ये वैल्यूज पिक करनी हो तो हमें कोई ऐसा तरीका नहीं आता कि हम ये वैल्यूज ठीक से पिक कर सकें। इसके लिए हमें ऑटोमेटिक मेथड चाहिए जैसे gradient descent, but just we have picked up suitable values here and like we draw a boundary here, and again if you see this is a linear boundary, right? But since this boundary is calculated based on the logistic regression, so it is fitting our data or classifying our data properly in this case. So for example, this is the class named as say 1 and this is the class say named as 0. Yes, no, false, true or whatever जो भी आप इन classes के नाम रखना चाहें, ठीक है? The decision boundaries are not always linear. अब जब तक तो हम linear regression की बात कर रहे थे, तो linear regression में ठीक है हम एक straight line से इस चीज को मॉडल कर रहे थे। लेकिन अगर आपको याद हो तो linear regression में भी हमने polynomials की बात की थी। Using polynomials you can get curvy boundaries, right?
क्लासिफिकेशन के केस में हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है because the points can be more complex or more randomly distributed than it seems to be, right? So we can use polynomials to make to handle like complex boundaries. So for example, आप जानते हैं कि अगर आप x1 और x2 की जगह x1 square और x2 square इस्तेमाल करें, you will get parabolic shapes, right? And you can get a circular boundary in that case, right? So for example, if we have a shape like this, right? So like this is 1, this is -1, this is 1, and this is -1, right? So in this case, if for example, in this case, if you choose the parameter values to be, for example, 1, 1 and -1, in this case it will be like 1. And now you will be drawing the boundary at 1, and that will be, since it is square function, it is all like basically square, so you can put square here. So like it will be more of a circular boundary, where for example you could have some points here and some points outside of that. So like this is one class and this is the other class. Just trying to say that using complex functions or using polynomials of different kind, you can get curvy boundaries as well, right? So we know that the square gives us the shape of parabola, right? So like blending that together can give us the circular boundary. And if for example you go to the higher degree polynomials, right? For example you go to cube or something like that, you can get even complex boundaries. For example, the boundary could be elliptical, or even more wiggly, something like that, right? So you can use complex polynomials to come up with something like that. Okay. So next is that we talk about like cost. If you remember, when we were talking about linear regression, we used a cost function, and that cost function was basically sum of the square of the errors. Actual value minus predicted value minus actual value लेते थे, फिर आप उसका स्क्वायर करते थे, फिर हर एक एग्जाम्पल के ऊपर जो जो जवाब आपका आ रहा है उनका सम करके फिर उसकी एवरेज ले लेते थे, तो उसे मजीद भी तकसीम करते थे मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। स्क्वायर क्यों करते थे हम एरर का? ताकि पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल ना करें और आप सूडो मिनिमाइजेशन की तरफ ना जा रहे हो। वो एक्चुअल मिनिमाइजेशन ऑफ एरर नहीं है बल्कि सूडो मिनिमाइजेशन है। So to like turn the positive numbers into negative numbers into positives as well, you just squared those numbers to like get that happens. Okay. So and like one good thing about like that function like cost function was that it was convex. एक अच्छी बात सम ऑफ द स्क्वायर्स की थी ये थी कि आपका जो फंक्शन था वो कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? लाइक दैट हैज वन ग्लोबल मिनिमम,
right? So like it's something like this, yeah, जैसे भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लें या उसका ड्रॉ कर लें, but that has one global minimum, right? So आप किसी भी तरफ से शुरू करेंगे, you will ultimately be reaching one global minima, and then the slope of the gradient will be 0 there, and you can halt your progress there. So that means you are guaranteed to find your global minimum if the learning rate is properly configured. हम लर्निंग रेट के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आप लर्निंग रेट को ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो इट इज पॉसिबल कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट कभी भी कन्वर्ज ना कर पाए, राइट? ओके, सो अब बेसिकली हम लाइक इस केस के अंदर अगेन हमारे पास वैसे ही डेटा सेट है, जिस डेटा सेट को हम पहले फॉर एग्जांपल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूमर साइज है, patient की age है, so these are for example say 2 features that we have, and then we have like data of multiple patients, say 100, 200, 300, 400. So we can have a number of features and number of training examples, and for each of the training examples we will have a predicted label or the actual label in the data that will be telling us whether in this case the tumor was malignant or not malignant, right? So that's basically आप वहाँ पे रिग्रेशन को इस्तेमाल करके इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको लॉजिस्टिक फंक्शन से गुजार सकते हैं, और लॉजिस्टिक फंक्शन से गुजारने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो एक कंटिन्यूस नंबर की बजाय एक प्रोबेबिलिटी होगी जो 0 और 1 के दरमियान बाउंड होगी, और आप उस प्रोबेबिलिटी की थ्रेशोल्ड को तय करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको किस क्लास में लेके जाना है, 0 में या 1 में। अब ये जो प्रेडिक्शन आपने की है, इस प्रेडिक्शन को आप एक्चुअल लेवल से कंपेयर करेंगे, आपके पास फर्क आ जाएगा, ठीक है? सादा रिग्रेशन के केस में आप ये सारे फर्क नोटिस करने के बाद उसका स्क्वायर करते थे, सम करते थे, एवरेज ले लेते थे, ठीक है? यही काम अगर हम यहां करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में कि आप प्रेडिक्शन करें, एक्चुअल लेवल को देखें, उनका डिफरेंस निकालें, उसका स्क्वायर कर दें, तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इसका सम कर लें, और फिर उसकी एवरेज ले लें, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल से या एम से तकसीम करके उसकी एवरेज ले लें, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन फॉर एग्जाम्पल डू। सो ये चीज यहां भी की जा सकती है, बट इट टर्न्स आउट कि अगर यही स्क्वायर्ड फंक्शन हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में इस्तेमाल करें, this does not turn out to be convex. We will not be proving this that why it is not convex, but like if you like exhibit this function at a deeper level, you will be able to figure out that this function is looking at this, for example, with a naked eye, you can say it is non-convex. Why is it non-convex? Because it has multiple local minima. So for example, यहाँ तो हमें मालूम है कि हम छोटे-छोटे स्टेप्स लेते-लेते अल्टीमेटली कन्वर्ज कर जाएंगे, स्लोप 0 हो जाएगी, and we will be able to find that one global minima. But in this case, if you start here, you will find a minima here. आगे जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ रही है तो आप आगे नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो ये मिनिमा मिल जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ये मिल जाएगा, right? So the problem, and like we have not made any statement about the proof of this, that why it is not a convex function. We are just making a statement that if we use the same squared function for the case of logistic regression that we were using for linear regression, that was convex for linear regression, but that does not turn out to be convex for logistic regression. Proving this is beyond the scope for us for the moment. Okay. अब हमें डिजायर क्या है हमारी कि जो भी फंक्शन हम इस्तेमाल करें, जो भी लॉस फंक्शन हम इस्तेमाल करें, वो कॉन्वेक्स हो, राइट? Why would we prefer to use a convex function? Because in convex function we have the guarantee that we will be able to find the minimum possible error. But in non-convex function there is no such guarantee, right? So we want to have a loss function which is convex. So that means no, we are not going to use the loss function exactly in the same way the one that we were using for linear regression. अब linear regression का cost function basically क्या था? We had defined it something like, we had defined it as j defined on like w and b. We were adjusting both the values of w and b, right?
it was like 1 over m. Then we were basically summing it where I ranged from 1 to m, and we also made like half of it, and then we had like prediction, right? So that was f defined on w and b on x minus y, right, on a particular training example. So like we have used the superscripts like I here, ये एक आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, and then we were squaring it, right? So this was the loss function that we were using. तो आप हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल लेते हैं, उसकी प्रेडिक्शन में से एक्चुअल लेवल को माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है? पहले हमने ये यहाँ पे 2 रखा हुआ था, यहाँ अभी हम 2 अंदर ले गए हैं. Again, for that same ridiculous reason to begin with, that this will make the math easy later, right? So that's the only reason. But we are not going to use this exact same function for logistic regression. Why? Because it doesn't turn out to be convex for logistic regression. So we will have to find some kind of modification, some kind of change or some new function. वो function कोई भी हो, लेकिन हमारा basic objective क्या है कि उस function को convex होना चाहिए. So why we have dropped this function, which was being used for linear regression, all right, because it was convex for that, but it is not going to be convex for logistic regression. So we are not going to use a non-convex cost function, right? So we need to find a new function. We need to figure out a function that is convex, and that is what we are going to use for logistic regression, so that we can guarantee that with proper learning rate configuration, we are guaranteed to find the global minimum, right? Okay. So it happens to be बस यार ये क्रॉस फंक्शन ही खत्म कर. So say we define this cross function with the letter L, and we say that okay, this is basically a function over W and B using a particular training example xi, right, minus yi is equal to, and this is equal to minus log bracket f w b x x I, I, right? Yes. If y is equal to 1, y I yi is equal to 1, yeah, that's all right. जी यहाँ पे, yeah, sorry, this is function. So यहाँ difference नहीं ले रहे, this is function. We don't know what is this function doing with that, right? So yes, that should be common. Function के अंदर arguments को आप comma से separate करते हैं, so that should be common, right? And the second case is minus log 1 minus f on w and b for xi, right? Yes, sir. If yi is equal to, now this is whole new function that we have defined now. हम कह रहे हैं कि जी हम actual label और predicted label के ऊपर एक नया loss function define कर रहे हैं that we are denoting with L. So L is a loss function defined on, which is like using the predicted value and actual value, and we are defining the new loss function to be in two different terms. हम कहते हैं कि अगर तो आपका actual label जो है वो 1 है तो loss function ये है, और अगर ये 0 है तो loss function ये है. अच्छा, अगर हम इस बात को कवर कर लेते हैं तो ये दूसरी बात ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज. तो अगर एक केस की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो हमें मालूम है कि दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी 1 minus 0.6 ही होगी. So if this is this, the other one is definitely going to be like, if it is like going to be defined by this.